बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हो द ललन टॉप सिनेमा। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग, ताकि जब भी हम कुछ भी अपलोड करें तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हमारे साथ जुड़े हैं परमव्रता चैटर्जी और हम बात करने वाले हैं इनकी जो अगला प्रोजेक्ट है जो आने वाला है, जुगाडिस्तान, रिलीजेस ऑन 4 मार्च लायंस गेट पर। तो क्या है इस प्रोजेक्ट में, क्या हो रहा है, इनका क्या रोल है? ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा, काफी अमेजिंग स्टारकास्ट है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और भी कई सारी बातें। सो लेट्स गेट टू इट। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड डूइंग दिस बहुत विद बहुत अस। शुक्रिया आपकी जी, थैंक यू। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट आपने साइन ऑन किया, आपकी वजह क्या थी? वाज इट द डायरेक्टर, आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी, क्या था वो रीजन जिसकी वजह से आपने इस प्रोजेक्ट को चूज किया? देखिए, पहली वजह आई वुड से वाज द डायरेक्टर। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आकर्ष खुराना को मैं पर्सनली मुझसे कभी मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन आई हैड वॉच्ड कारवा, उनकी जो फिल्म है, एंड अनदर ब्यूटीफुल। सीरीज दैट ही हैड मेड फॉर अनदर प्लेटफॉर्म। एंड आई थॉट दैट ही हैज अ, मुझे ये लगा कि उनकी जो सेंसिबिलिटी है वो काफी मजेदार है और काफी अलग है बाकी लोगों से। दूसरी वजह आई वुड से इज डेफिनेटली द फ्रेशनेस ऑफ द कंटेंट। ओटीटी स्पेस में हम ज्यादातर क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं, विच इज फेयर, विच इज ग्रेट। आई मीन, मैं खुद हिस्सेदार रह चुका हूँ, मैं खुद बहुत सारे। बहुत सारे एक्चुअली, एंड आई लव थ्रिलर्स। बट कभी कभी आपको थोड़ी सी वैरायटी भी चाहिए होती है, एंड यू वांट टू सी समथिंग एल्स ऑफ अ, you want to see content of a different tonality, of a different genre altogether. तो मुझे लगा कि ये ओटीटी स्पेस में जुगाड़िस्तान जो जिस जॉनर में है वो काफी फ्रेश होने वाला है। काफी ताजा है। मतलब इट्स आल्सो एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो टेंड टू टेक पीपल बैक डाउन मेमोरी लेन इनटू देयर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेज। और मुझे पढ़ के भी वैसा ही लगा कि ये जो शरारतें जो लोग कर रहे हैं, जो ये जुगाड़, ये स्कैम की जो बात चल रही है ट्रेलर में, किसी ना किसी टाइम पे, कोई ना कोई मोमेंट पे, किसी ना किसी डिग्री पे हम सब कर चुके हैं ये थोड़े बहुत एक्चुअली। मे बी नॉट एन एग्जामिनेशन स्कैम, नो आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन स्कैम, बट ये जुगाड़ वाला जो सिचुएशन है, ये मतलब हम जुगाड़ तो हम अब भी करते हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री से है तो हम तो माहिर है जुगाड़ में, वो अलग बात है। लेकिन सेइंग इवन व्हाइल स्टडीइंग, आई थिंक हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब कर चुके हैं। So that all reminded me of my college university days, and I thought it's going to be a nice little change from the kind of things I'm doing. So, yeah, that these are the two main reasons I would say. You sort of walked into this one, but I have to ask, फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या जुगाड़ करते हैं? कॉलेज में आपने क्या जुगाड़ किया था? फिल्म इंडस्ट्री में तो फिल्म इंडस्ट्री कायम है जुगाड़ पे, आई वुड से, लाइक एंड दैट इज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, लाइक फ्रॉम शॉट के दौरान किसी किसी का शायद किसी का चप्पल फट गया या कुछ हुआ, एंड हाउ टू कैन फिक्स दैट क्विकली सो दैट द शॉट डजंट गेट डिस्टर्ब, नेक्स्ट शॉट डजंट गेट डिस्टर्ब। और चेंज, मतलब रिप्लेस करने की टाइम नहीं है, तो यू जस्ट क्विकली डू सम क्विक फिक्स। Basically, by jugaad in the film industry, I mean quick fixes. So the film industry is erect on quick fixes. So वहां से लेकर बहुत important VFX level पे, जैसे मतलब you don't the CG artist has forgotten the CG ball, you just make do with a doll or something. It's just it's fascinating how you kind of do jugaad all the time in the film industry. Even in small things like I mean not so small things like एक डायलॉग शायद हमने बुलवाया नहीं या फिर कुछ चेंज करना पड़ा हमें बाद में, एडिट में जाके हमने देखा, तो व्हाट वी मेक पीपल डू इज जब वो बैक टू कैमरा होते हैं तो उनसे बुलवा लेते हैं। ये भी तो जुगाड़ी हुआ ना। तो इट्स ऑल ऑफ दैट, सो इट्स फुल ऑफ जुगाड़। एंड कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आई वाज अ फेयरली गुड स्टूडेंट, तो मुझे ज्यादा जुगाड़ में घुसना नहीं पड़ा फॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ, छोटे मोटे तो मतलब कर चुके हैं हम अपने जमाने में। सीक्रेट रहने देते हैं। Yeah. I also want to know, where does this project fit in your career? आपने ये choice की, you chose this project. Where does it fit in? I think in the fun quotient. Is that Because I think yeah, I was just I did this. I had just finished Aranyak, and I was about to start with Mithya,
and another show for another platform जो कि अभी release नहीं हुई है, and my Bengali films, and I was offered this, and I kind of, once I read the synopsis, I thought this is going to be fun, and that belief got only strengthened. It only further strengthened once I met Akarsh and Aadhar, the two directors, the two brothers. And as I said, पहले भी कह चुका हूँ मैंने कि I really admire their sensibilities. Having watched some of his works earlier, and I love the people जो जिसके साथ मैं काम करने वाला था. And that also becomes important, once you've worked for a fair number of years, you want to work with people जिनके साथ काम करने में आपको मजा आए. And the shoot was in Delhi. The, I hadn't been to Delhi in a while, so I thought, yeah, it's coming as a nice little fun package. लेकिन बीच में actually shoot के बीच में second wave हो गया actually, so we had to stop shoot, and we were shooting. We had to stop shoot. I think end of March, April, in the beginning of April, we had to stop shooting, and we only could resume in July, and we finished it in July actually. So yeah. You really keep walking into this. Now it's led me to another question. You said I loved the people I worked with. ऐसे होता है when you don't like the people you work with, तो आप क्या करते हो? Swallow it. Swallow the bitter pill and just keep working. Because I mean, हम professionals हैं तो करना ही पड़ता है. तो ऐसे बहुत incidents होते हैं जहाँ पे लगता है यार इनके साथ काम करने मजा नहीं आने वाला है. मतलब ये तो oh my god, how am I to spend ऐसे 15-20 दिन 25 दिन निकालने हैं इनके साथ, लोगों के साथ. तब you just have to swallow the bitter pill. भाई अपने आप को समझा लो. हाँ, तो आप प्रोफेशनल हो तो चलो काम पे लग जाओ. तो आप साइन कर देते हो because you like the project, you're looking at the larger picture. Yeah. If the larger picture fits in somewhere, then yeah, you kind of go ahead and do it, because it is not always possible to tell from before ना कि इनके साथ काम करने में कैसा लगने वाला है. मतलब you, a lot of the times you don't really get that vibe. You start understanding only once you start working, and by then it's too late. I love that honesty. Thank you. आपने एक पिछले इंटरव्यू में कहा था कि जब आप रवीना टंडन जी के साथ काम कर रहे थे तो आपके सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि ओ इट्स लाइक अ फैन बॉय मोमेंट. बट कभी और ऐसे हुआ है आपके साथ वह आपको लगा हो कि आप स्टार स्ट्रक रहे हो शायद पहले दिन इनिशियल डेज में जब आप स्टार्ट आउट कर रहे थे, ऐसे कोई मेमोरी हो where you were very excited? Yeah, I mean, in my initial days in the Bengali industry, I had the opportunity of working with some very senior actors and actresses, जिनको मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ, and I was quite awe-stricken कि अरे यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ एक फ्रेम में खड़े होने का मौका भी मेरे पास आएगा किसी दिन, and the fact that I'll be able to work with them someday. तो ऐसा हुआ है, शुरुआती दौर में ऐसा हुआ है कुछ 3-4 ऐसे इंस्टेंसेस. Recently I don't think so, but I think not starstruck, but while working on Pari, I was little stunned with Anushka's energy. उनकी जो एनर्जी लेवल जो है was like अरे बाप रे. And मतलब I am quite high on energy, but ये तो मुझे जब when I met her for the first time, मतलब ये तो मतलब मेरे से मतलब कुछ 100 गुना ज्यादा है भाई. मतलब ये she was very high on energy, so that was quite it was not being starstruck, it was being energy struck, urja struck. Yeah. I just added a new word to my dictionary, urja struck. Okay. Yeah. Since we spoke of Raveena Tandon, I also want to know कि आपने जब उनके साथ काम किया अरण्यक में, it was her comeback project. तो it's such a big deal, right? तो what was day one on the set like? और दो actors जब साथ में काम करते हैं तो उनका जो वो तालमेल होता है वो कैसे बैठा आप दोनों के बीच? See, हम जब बड़े हो रहे थे actually, we had seen so much of Raveena Tandon on the Hindi, the Bollywood screen, कि मैंने जब उनसे मिला, well, we have been doing online readings for a very long time. But like we were shooting for Aranyak in October, November, we started 2020, and हम मई के महीने से या जून से शायद हम reading चालू था. So we had already developed a certain sense of familiarity, but so it never really felt like that. Acha, matlab, I'm meeting someone new, because there was a lot of association with Raveena Tandon already, and then the online readings and everything, and then it got very easy because she's a very easy person. She's a very easy breezy person to be around. So that helped actually.
Okay, thank you. So you were already familiar, so it was getting to work with each other just sort of fell into that rhythm. Yeah, totally, absolutely. Yeah. Okay. So, because you speak a lot about Bengali cinema as an industry, and you obviously feel very strongly about it. और सबको पता है कि सत्यजीत रे के बारे में सबको पता है एंड एक लौते फिल्म मेकर है जिनको ऑनररी ऑस्कर मिला है तो ऐसे कौन से टाइटल्स होंगे जो आप सजेस्ट करेंगे एज अ रेडी रेकनर एज एन इंट्रोडक्शन टू बंगाली सिनेमा कि सबको ये देखना ही है आप स्टार्ट कर रहे हो Recent films, classics कभी and all that. कभी कोई पहली बार बंगाली सिनेमा से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको क्या देखना चाहिए I can send a list to you if you want. I can send a list of 10, and ओके you can send it out on Lallantop. But abhi bolne ke liye, I would say that 3-4 films that I think I should definitely mention. Um, I would say, um, uh, so Satyajit Ray की बात की अभी आपने तो so he has a famous trilogy. Um, it's called the Apu Trilogy. It starts with Pather Panchali and then comes Aparajita and then it's Apu Sansar, which means the world of Apu. I think the world of Apu Shankshar is, I think, it's something that one should definitely watch as a beginner who is starting out watching Bengali cinema. I think ऋत्विक घटक की एक फिल्म है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसका नाम है अजांत्रिक I think that is something that one should for sure watch. Um, Tapan Sinha's Golpo Hole Shotti, the original film, जिसके ऊपर बावर्ची बनाई गई थी बाद में. राइट So the original, I think that's a beautiful film that everyone should watch. I can name these three for now, and I can also name a lot of films from recent times. But उसके लिए कुछ एक और interview चाहिए होगा. So एनीथिंग दैट you've been in आपका कोई पर्सनल काम आप अगर बहुत सारे हैं आई वुड से सिनेमा वाला हेमलॉक सोसाइटी द्वितीय पुरुष काफी सारे कालबेला yeah. तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ जस्ट वंडरिंग आउट लाउड कि इट वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ सिनेमा है ना तो वो तब की बात है और अब आज जब ओटीटी पे देखते हो तो जैसे साउथ सिनेमा हैज रियली सॉर्ट ऑफ टेकन ओवर डब होके आते हैं मलयालम सिनेमा Correct. अगर आप देखो इवन थ्रू द पैंडेमिक कंसिस्टेंटली गुड कंटेंट हैज बीन कमिंग आउट ऐसे Totally. बंगाली सिनेमा के साथ क्यों नहीं हुआ हाँ आज इवन वी कहाँ पे है वंडर इवन जी जी सो एक्चुअली आज से 10-12 साल पहले एक रिवाइवल सी हुई थी बंगाली सिनेमा में जिसमें हम सब शामिल है आज भी एक्चुअली बट कहीं जाके मुझे लगता है कि आज से 4-5 साल पहले जो रिवाइवल जो हो रही थी वो कहीं पे आके अटक गया है आई फील इट्स लिटिल स्टक समवेयर इट्स लिटिल स्टक इन इट्स ओन लिटिल कुकून तो मुझे लगता है कि एंड ऑल्सो द ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस अगर ऑडियंस का जो बेस है वो अगर नहीं बढ़ेगा ना तो एक फिल्म इंडस्ट्री बढ़ नहीं सकती तो आई थिंक द ऑडियंस बेस ऑल्सो नीड्स टू एक्सपैंड एंड एक साउथ सिनेमा के बारे में एक बात मैं बता सकता हूँ कि क्या है ना साउथ की जो ऑडियंस है वो लोग बहुत लॉयलिस्ट होते हैं मतलब साउथ इंडियन फिल्म्स की एक तो है एक साउथ इंडियन फिल्म हॉल में लग गई थिएटर में लग गई तो लोग वो देखने जाएंगे ही जाएंगे और ऐसा नहीं है कि वो सोचेंगे कि एक हिंदी पिक्चर भी आई है तो मैं कौन सा मतलब मैं सोच लूं जरा कौन सा देखना है कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता वो लोग साउथ इंडियन फिल्म अपने भाषा की फिल्में देखने जाएंगे बिकॉज द साउथ इंडियन मार्केट कंज्यूम्स लेस ऑफ हिंदी कंटेंट और वो देयर ओन कंटेंट के बहुत ज्यादा भरोसा है एंड लॉयल्टी भी है लेकिन द बंगाली मार्केट इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ हिंदी सो sometimes for a regional industry like Bengali it's difficult to match up to them especially जबकि ऑडियंस इतनी लॉयल जब नहीं है तो that is also a challenge that we have to constantly deal with so इसीलिए जब on a platform level a platform looks at numbers right maybe when a Malayalam film comes or Tamil film comes to a certain X platform platform की जो subscription है वो देखने लगते हैं कि ये 3 times बढ़ गया है क्योंकि people who were not on the platform they have come on because they now are finding Malayalam or Tamil films अपनी their own language films on the platform but for the Bengali audience the Bengalis are already there watching Hindi stuff so when a Bengali film, suppose if it comes, there are doubts in people's minds that whether a fresh subscription will happen because the Bengali audience is already consuming Hindi, right? So कितने नए लोग आएंगे?
सब। तो इसको लेके एक थोड़ा सा मतलब एक डेमोग्राफिक अगर हम समझे तो हमको समझ आएगी ये बात। लेकिन ये कहते हुए आई वुड स्टिल से दैट I know for a fact that almost all the uh, national and the international OTT platforms are considering branching out into Bengali. Maybe not right away, but in the next 2-3 years, I'm hoping that we will see original Bengali content. And yeah, and we will also be able to get out. The Bengali industry will also be able to get out of its cocoon and actually get at par. आपको लगता है ऐसे कंटेंट बन रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है? जी जी, कंटेंट तो बहुत ही बढ़िया बन रही है, लेकिन बस वी आर नॉट बीइंग एबल टू मैच इट अप विथ स्केल वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, और लाइक रीच आउट वाइज। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर हम नेशनली बात करें बंगाली कंटेंट की, तो एवरीबडी नोज, एवरी प्लेटफॉर्म नोज अबाउट द नंबर वन बंगाली कंटेंट पोर्टल, एंड सबको पता है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री एक्चुअली। It's just that we need to, I think we need to market ourselves better and we need to invent our cinema better. Okay. आपने OTT प्लेटफॉर्म्स की बात की, एक है हॉय चॉय विच इज एक्सक्लूसिवली बंगाली कंटेंट के लिए, तो ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म है जहां लोग देख सकते हैं? आपकी कोई यार रिकमेंडेशन? हम तो जुगाड़िस्तान के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे पता भी नहीं है कि ये अलाउड है कि नहीं कि मैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करूं एक्चुअली, बिकॉज आई वांटेड टू से होइचो's नेम, आई डिड नॉट, आई रिजर्व्ड इट बिकॉज आई वंडर्ड वेदर आई शुड, बट देन आपने बात छेड़ दी एक्चुअली। तो या देयर आर लॉट ऑफ अदर पोर्टल्स, बट होइचो इज द बिगेस्ट ऑफ कोर्स, यस। कोई और आप रेकमेंड कर सकते हो, कोई नाम फॉर पीपल टू व्यू? There is some good content on Adda Times. Of course, Z has a Bengali section, and they are producing a lot of content in Bengali, Z5. So yeah, I don't know if I'm allowed to take the names of other portals, but yeah, I think it's all in the greater good of cinema, na? I'm sure the people watching Absolutely. here, the admin is also thinking the same. I really hope so. Yeah. दिन के अंत में इट इज अबाउट द व्यूअर एंड बेस्ट क्वालिटी फॉर देम, तो बस उसी में हमारा भी इंटरेस्ट है। क्या बात है। तो आपने जुगाड़िस्तान की बात की, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सीरीज में जो बनाया, जो हमने ट्रेलर में देखा है, उससे मैं जानना चाहती हूँ कि जुगाड़ को किस तरह इंटरप्रेट किया गया है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में, और आप लोगों को क्या वाइब देना चाहते हो इससे? आपने कहा कि एक तरह से फ्रेशनेस है, नॉस्टैल्जिया है, कॉलेज है, बट आपके साइड से क्या वाइब रहा था एंड कैसे इंटरप्रेट किया जुगाड़ को? I think jugaad in Jugadistan, it basically means, a way to kind of pass through difficult exams in flying colors, basically. तो हम जो पढ़ाई करते थे, हमारे साथ भी ऐसे बहुत लोग पढ़ते थे जो हमारे दोस्त थे, जिनको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था उतना, बट दे स्टिल वांटेड टू डू वेल, दे स्टिल वांटेड टू काइंड ऑफ पास देयर एग्जाम्स, अदरवाइज घर में डांट पड़ेगी या फिर ये होगा वो होगा, मतलब आगे चल के कुछ काम वाम नहीं मिलेगा, एंड ऑल ऑफ दैट। So getting your degree is always important for anyone, right? So but it is not always that you, and with times it is happening that there is so much of distraction all around, that padai often becomes a little a matter of is sometimes becoming a matter of tertiary priority, not even secondary, tertiary priority. लेकिन डिग्री तो फिर भी चाहिए ना, तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा फिर, मतलब डिग्री के लिए। तो दैट इज हाउ जुगाड़ इज बीइंग इंटरप्रेटेड इन दिस, इन अ वेरी डायरेक्ट वे, and not in a metaphorical way, it's in a very direct way it is being interpreted, and वो जुगाड़ करने मतलब जुगाड़ करने के तरीके कई अपना लेते हैं लोग, एंड some of them are not completely legal and some of them are not completely right, and such वो तरीके actually ends up in producing scams. तो सो जुगाड़िस्तान में हम ये जो एग्जामिनेशन स्कैम जो है, जो इसके बारे में हमने सुना है, पहले भी पढ़ा भी है एक्चुअली अखबारों में, या फिर देखा है हमने टीवी न्यूज पे, रेडियो न्यूज पे सुना है। इट एड्रेसेस दिस इशू विच इज अ फेयरली सीरियस इशू, बट अपने ह्यूमर को रखते हुए, अपनी फ्रेशनेस को बरकरार रखते हुए। तो आई थिंक दैट इज द यूनिकनेस ऑफ जुगाड़िस्तान, दैट इट एड्रेसेस एन इशू लाइक दिस, बट इन अ वेरी स्वीट एंड सार, इन अ बिटर स्वीट वे। आपकी ब्रीफ क्या थी इसके लिए, और आपका स्क्रिप्ट की तरफ अप्रोच क्या था? क्योंकि कॉपरोल्स कर चुके हैं जिसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट, तो यहाँ पे कैसा अलग अप्रोच रहा आपका? ये बहुत ही अलग था, क्योंकि वेरी एंडियरिंग पर्सन, मेरा ब्रीफ था एंडियरिंग पर्सन, स्लाइटली सॉल्ट एंड पेपर है, प्रोफेसर है,
unmarried, single, and the younger women in the class, they absolutely love him, especially the women. And I just stopped it there. अच्छा हो गया है मेरा brief, मतलब मैं तो खुश हूँ भाई, हाँ, और नहीं चाहिए brief मेरे को, हाँ. हम भी ऐसे ही खुश हैं। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ क्योंकि हिंदी सिनेमा में 10 साल होने वाले आपको मार्च में कहानी रिलीज हुई थी एंड जी. दैट्स हाउ यू केम इनटू दिस इंडस्ट्री। तो एक वन होल डेकेड हैज पास्ड, इसका कोई हाई पॉइंट रहा है आपके लिए जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? देखिए, actually I've been working in the film industry overall for 20 years now. I started very young, so very young. And I never thought, even after Kahaani, I never thought that I'm actually a part of the Hindi industry per se. I think that I'm a part of the Hindi industry in the last 2 years, a lot more than before. मुझे लगता है कि कि पिछले 2 सालों में मैंने जितने काम किए हैं ना, फिर दो नहीं, मैं कहूँगा परी के टाइम से 2018 से पकड़ूंगा मैं एक्चुअली. So 18 to 22, so it's like I said 3-4 years. I have done a lot more work in Hindi than ever before. So I think 2018 was kind of my rebirth in the Hindi industry, and I would like to continue with this streak actually, and because I really juggle two industries now. And I also live between two cities. I live in Kolkata and in Mumbai. So I think I would like to take as like Rajeev Masand sir was just telling me a few days ago. He just mentioned that earlier uh, after Kahaani you were kind of little unsure. You just here dipped your toes here, but not really sure. But this time it's nice to see you that you're more assured, you're more confident, and you're doing a lot of work, which is great. I think OTT has also a bit of a role to play in that. The scope of doing sensible work has also gone up by leaps and bounds. So yeah, I think this is sort of my second innings in the Hindi space, and I would like to call it my first innings because this is something that I would like to continue with. और आप कितने सैटिस्फाइड रहे हैं अपने इस जर्नी को लेकर अपने करियर में? काफी, बहुत ही काफी. I mean, I I like working on sensitive and sensible things, and as long as I manage to do that, I'm a pretty satisfied person. कुछ नया क्रिएट करने के लिए जो zeal जो है वो that keeps me alive, that keeps burning inside. Because I also direct, and that keeps me going quite a bit. But as far as acting is concerned, I've been quite satisfied. I've always looked at sort of content driven projects, content driven characters. So yeah, I think I'm pretty satisfied. Which brings me to my next question. आपने कहा कि मैं 2 cities के बीच में अपनी लाइफ जगल करता हूँ, direction, producing भी अपना खुद का Yeah. production house. Yeah. Can we see you producing something हिंदी में शायद OTT पर? अगर आप लोगों से चांस मिल जाए तो क्यों नहीं भाई? You know what I mean? Yeah. No, actually, we did produce a series in 2020, which was a bilingual series actually, and did pretty well in Hindi as well. It was called Kali, and Kali season 2 was bilingual. We also produced another season called Mafia that was also Hindi, and we will be producing something in Hindi soon. Yes. Okay, तो आप सबके लिए there is something coming up to look forward to. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप what did you set out with? आपका जो like intention क्या था? आप एक्टर बनने आए थे, नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. आइडिया क्या था initially? No, I didn't want to be an actor. I never thought I'd be an actor. It was a happy accident. 20 साल पहले एक accident हो गया था जिसकी वजह से आज मैं actor हूँ. And but I always wanted to be a filmmaker, which I am, and I also studied filmmaking. So it's good that I get to do what I actually had set out for, which is being a filmmaker. And उसके साथ just by being a filmmaker, you cannot get so much adulation from people. The kind of adulation you get being an actor. So I think it's good in a way that I've come to be known as an actor, because of which जिसके वजह से मुझे इतनी adulation, इतनी प्यार मिलती है. And at the same time, because I direct, I also get to kind of quench my creative thirst. So yeah, I can't complain. Just I'm going to dissect that line that you just said. I get to quench my creative thirst. That doesn't happen when you're acting. Not always. So since I had काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग तय कर लेते हैं कि उनको एक्टर ही बनना है, एक्टिंग ही करनी है, क्योंकि
उसमें they find their satisfaction, they dream of finding their creative satisfaction through acting. But it wasn't the case with me. I always wanted to be a filmmaker. So acting happened. So yeah, over the years I have learned to be satisfied with acting, creatively satisfied with acting, but I never set out to be an actor. So मेरे दिमाग में वो हमेशा चलता रहेगा कि my what I actually wanted was to tell stories on the screen as a filmmaker. So I divide my, just like my two cities, I also divide myself and uh, my creative satisfaction into two avenues, one from acting, one from making films. Also, आपके पेरेंट्स फिल्म क्रिटिक्स हैं, तो उसका what effect did it have on your upbringing? Also, film criticism then, जब film clubs हुए करते थे और जैसे discussions होते थे versus आज. आप कहाँ से हो वैसे, दिशा? बैंगलोर से. How come you know so much about film clubs and all that? मैं सुनता नहीं हूँ आजकल किसी को, पता भी नहीं था मुझे, किसी को पता है film clubs के बारे में, film societies के बारे में. Actually, good to know that you know. Wow. So yeah. So I think what I got from them was the atmosphere. An atmosphere, the mahol जिसको कहते हैं, and that atmosphere which helped me grow up in the midst of good cinema, good literature, good music, and being more inclined towards the arts, the liberal arts, and all of that. I think I have been very fortunate. I've been very unfortunate in losing both my parents very young, but I have been very fortunate in receiving or in getting as legacy, getting the atmosphere that my parents gave me. So yeah, you lose some, you win some. So that's a nice way of looking at it. और मेरा आखिरी सवाल ये है कि फेलुदा में आपने काम किया था 2017 में, तो would you make that in Hindi? और आपका सबसे पहला ब्रश कैसा रहा? आप when you were a child, I'm thinking तब आपका introduction हुआ होगा, पहली बार इस दुनिया के बारे में पता लगना, उसके साथ interact करना. Tell us about that memory. Which memory? जैसे फेलुदा पे आपने काम किया 2017 So में. no. Actually, my brush with Feluda started way back. So Feluda, for those who don't know, Feluda is a very famous Bengali sleuth detective. Bengali literature is full of very famous detectives, private detectives. Feluda being one of the most celebrated of them. It's written by Satyajit Ray, the filmmaker, who was also a prolific writer. So actually, I, of course, as a reader, bachpan mein, every Bengali kid grows up reading Feluda. Even today, in this world, in this times of video games and Instagrams and all of that. So which is a great thing, I think. So I grew up reading a lot of Feluda and other works of Satyajit Ray. Actually, my first feature film was a very successful film where I played Feluda's assistant, Topshe. And I did that for 3 consecutive films in that franchisee. And only after that, in 2017, we produced, and it was a very small project, but we got our hands on the rights, on some rights of Satyajit Ray, Feluda stories, and nobody was talking about OTT at that point in time. The OTT platform we made it for was a nascent and new one, so we kind of, it was a very adventurous kind of a project, ambitious project, but we did it then, and we have plans to do it again in the near future, still in Bengali, but in a much bigger scale and in a much more ambitious way. Now that we have a little more bandwidth, we want to do it on a bigger scale soon. That is so exciting to hear. I'm looking forward to this. नमस्कार, मैं हूँ परमव्रता और आप देख रहे हो Lallantop Cinema. I have just had a lovely chat with Zisha, and I really hope that you guys watch this chat too. Wish you all a great year ahead, great times ahead, free of the pandemic, coming out of this disease. সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজে ভালো থাকবেন, আর পাশের মানুষটিকেও সুস্থ রাখবেন. Thank you. This has been so good. Thank you so much. Thank you, Zisha. I can't wait for 4th March to watch Jugadistaan on Lionsgate. Thank you, Zisha. Thank you very much.